Hello students and welcome back to the second lecture of chapter number 1st, the reproduction and organisms for class 12th. In our previous lecture we have been talking about what is life, what is reproduction, the different mechanism of reproduction. पिछले वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि लाइफ क्या होती है, लाइफ के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है, why reproduction is necessary to sustain life from one generation to another, लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन किस तरीके से एसेंशियल होता है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ताकि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके, सस्टेन कर सके एक जनरेशन से दूसरे से अगली जनरेशन पे. ओके, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी. अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें ये देखना है कि कितने तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर्स टू the formation of offspring from a single parent with or without the formation of gametes. So let us focus upon asexual reproduction. It refers to the formation of springs. It refers to the formation of offspring with or without the formation of gametes, with or without the formation of gametes in an organism. So this is the process of asexual reproduction, in which from a single organism with or without the formation of gametes the offspring can be born. There are several different methods of asexual reproduction which are being followed. अलग अलग मेथड्स होते हैं asexual reproduction के. कौन कौन से मेथड्स देखे गए हैं एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर, इस बात को हमें देखने की जरूरत है. A large diversification has been found in the mode of reproduction in the case of animals as well as in the case of plants. Now let us consider which are the different modes of asexual reproduction. Asexual reproduction methods varies in different plants and animals, in different animals and plants. So let us start with bacteria. In the case of lower prokaryotes, such as bacteria, the mechanism of asexual reproduction is primarily the binary figure. In case of prokaryotes, that is bacteria, the exact mechanism of asexual reproduction is binary fission. Now what is binary fission? Binary fission क्या होता है? Binary fission is a method of cell division in which a single bacterial cell gets divided into the two bacterial cells, and both the bacterial cells are exactly carbon copies to each other, so they are referred to as clones. Binary fission एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक बैक्टीरियल सेल दो बैक्टीरियल सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है. ये माइटोसिस और मियोसिस से बिल्कुल अलग अलग होता है क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, एक सिंपल फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन है. एक बैक्टीरियल सेल दो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, एंड बाय विच देयर इज नो डेथ इन द केस ऑफ बैक्टीरिया. इसकी वजह से ही बैक्टीरिया में नेचुरल डेथ नहीं होती और बैक्टीरिया अपने नंबर को लगातार इंक्रीज करता चला जाता है. सारे के सारे जो बैक्टीरिया बनते हैं दे आर एग्जैक्टली कार्बन कॉपीज टू ईच अदर एंड दे आर रेफर्ड टू एज क्लोन्स. बाय दिस प्रोसेस, by binary fission, okay, just writing it out here. By binary fission, a single bacterial cell will divide
to form a single bacterial cell. This is a single bacterial cell. This single bacterial cell will divide. It will produce two different bacterial cells, the daughter cells. This is one daughter cell, then there would be another daughter cell. The first daughter cell, the second daughter cell. These are referred to as the daughter cells. These are referred to as the daughter cells which are being produced. And in the case of E. coli, अगर हम सबसे सिंपल बैक्टीरिया की बात करें, E. coli की बात करें, तो ये प्रोसेस हर एक 20 मिनट में होता है, क्योंकि E. coli का लाइफ स्पैन कितना है 20 मिनट्स. All the progeny which are being produced, all the daughter cells which are being produced, they are exactly same. सारी की सारी daughter cells सेम होती हैं, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, clones. All daughter cells produced are exactly carbon copy of each other, and so are referred to as clones. इन्हें हम क्या कहते हैं? They are referred to as clones. अगर हम प्रोकैरियोट्स के बाद में थोड़ा यूकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं, अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यीस्ट के बारे में, या हम बात करते हैं अमीबा के बारे में, तो अमीबा जो एक लोअर यूकैरियोट है, तो वहां पर क्या होता है, इन द केस ऑफ अमीबा द बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस. ठीक है, इन केस ऑफ अमीबा, इन केस ऑफ लोअर प्रोकैरियोट्स, इन केस ऑफ लोअर यूकैरियोट्स, लोअर यूकैरियोट्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, just a minute. In case of lower eukaryotes such as amoeba, again division occurs by binary fission. So here also the division is going to take place by binary fission. Okay. Now in the case of yeast, अगर हम बात करते हैं yeast के बारे में, in the case of yeast there is budding. A bud-like outgrowth is being produced from a yeast, and that lead to the formation of the new yeast where the bud falls off. New colony of the yeast where the bud falls off. This method is referred to as budding. So let me explain it to you. What is budding? Now in the case of yeast, there is another asexual reproduction method that occurs in the case of yeast. For example, in yeast, which is a type of fungi, a bud-like outgrowth. For example, this is a colony of yeast that is growing. A bud-like outgrowth can be produced. Here there is a nucleus, another nucleus division has taken place. There is a bud-like outgrowth. This bud-like outgrowth falls over a new place and lead to the formation of a new colony of yeast. This is the daughter colony. This is the parental colony. So the parental colony gave rise to a daughter colony. Parental colony से क्या बन गया? Daughter colony बन गया. तो इसके अंदर क्या हो रहा है? In yeast, budding occurs. Budding refers to a process in which a bud-like outgrowth from the yeast parental colony, a bud-like outgrowth from the yeast colony separates to form another colony. This happens in the case of yeast. In the case of certain fungi, such as in the case of penicillium, you could have studied that penicillium has a finger-like projection, and it leads to the formation of conidia, or conidiospores are being produced. These spores, when burst open,
will be released in the atmosphere and will form a new viable colony when they will meet their adequate environmental condition. देखिए पेनिसिलियम के अंदर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, ये भी एक फंगस है। इसके अंदर क्या होता है, पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर आपके पाम जैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में से कुछ स्पोर्स बाहर चले जाते हैं जिन्हें हम कोनिडियो स्पोर्स बोलते हैं, कोनिडिया कहते हैं। और ये कोनिडिया जब फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में फॉल करते हैं वहां पर इनकी ग्रोथ हो जाती है और नई कॉलोनी को ये ग्रो करा देते हैं, किसकी, पेनिसिलिन की। इन द केस ऑफ पेनिसिलिन, इन सर्टेन अदर फंगस, नोट, in some other fungus, some other fungi such as penicillium, now in the case of penicillium what is going to happen, it has the projections like this and then finger like projections are there, and these will lead to the formation of spores called as conidia, finger like projections which are referred to as conidia, which contains conidiospores. Okay, these conidiospores falls over the substratum, falls over another substrate, falls over and forms a new colony. They will lead to the formation of a new colony. It will lead to the production of a new colony, so that a new colony can be produced. Okay, and then the formation of these conidia is being continuously produced. So conidia formation is going to take place and they are going to be produced. This is how the asexual mode of reproduction takes place in the case of yeast or fungus. Now the next topic that we are going to talk about is that in the case of algae and certain other fungi, there is the formation of zoospores. Now what do you mean by zoospores? How these zoospores are being produced, that we will have to visualize. Okay, now let me just rub it out. In some fungus and algae, zoospores are being produced. In some fungus and algae, zoospores are produced. Now what are these zoospores? Zoospores are spore-like structure which have flagella. They can be positive zoospores, negative zoospores. Positive zoospore indicate males, negative zoospores indicate females. As both the spores are of same type, so such type of reproduction is said to be isogamous type, gamous mode of reproduction. While in humans, the egg is of larger size and the sperm is of smaller size, so that is referred to as oogamous type, okay, or anisogamous type, where the gametes are of different size. Okay, so in fungus and algae, zoospore formation takes place, whereas in certain other organisms such as sponges, the formation of gamules occur. In case of bryophytes, the formation of spores occur, formation of gamules occurs. Formation of gamules occurs in the case of bryophytes. Bryophytes are referred to as bryophytes or sponges.
in the case of sponges only, formation of gametes occur, and these gametes will lead to the formation of new species. Sorry, not in the case of bryophytes, in the case of sponges only. That is in the case of poriphytes. It leads to the formation of gamete-like structures. Okay. Now, this is all about the animal kingdom. Asexual mode of reproduction is also found in the case of plant kingdom. Plant kingdom में भी asexual mode of reproduction पाया जाता है. Plant kingdom में किस तरीके से asexual mode of reproduction पाया जाता है, that we will have to see. In the case of plant kingdom, asexual reproduction in similarly asexual mode of reproduction is also found in plant kingdom. Now in the case of plant kingdom, what is being done? प्लांट किंगडम में क्या होता है, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो हमें सोचने की और समझने की जरूरत है. इन द केस ऑफ प्लांट किंगडम, instead of using the term asexual reproduction, we use another term that is referred to as vegetative propagation. In case of plant kingdom, the term asexual reproduction is replaced with vegetative propagation. Now here it becomes very important for you to know the difference between the vegetable and the fruit. देखिए फल और सब्जी में एक बहुत बड़ा अंतर है, हमेशा याद रखिएगा, मजाक में मत सोचिए, जरा समझ के देखिए. फल क्या है, फ्रूट क्या है? The one which is being formed after the act of fertilization is fruit. जो फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है ना, वो फ्रूट है. वेजिटेबल क्या है, सब्जी क्या है? The one which is being formed after the act of asexual reproduction is said to be vegetable. This is very important. जब भी दुनिया में टर्म आपको कोई फ्रूट बोलता है तो आपको समझ लेना चाहिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है. जब भी वो वेजिटेबल बोल रहा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है. Now this is very important. The terms, so please look here, the terms vegetable indicates that it is being produced through vegetative propagation, while the term fruit clearly indicates that it is a product of sexual reproduction. While the term fruit indicates that it is the product of sexual reproduction via the fusion of gametes. जब भी आप कोई वर्ड यूज कर रहे हैं फ्रूट, तो इसका मतलब हो जाता है ये किससे बना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, via the fusion of gametes. So here the fusion of the gametes takes place, then only it leads to the formation of a fruit. Else fruits can never be produced. फ्रूट्स जब भी बनते हैं जब फ्यूजन होता है गेमेट्स का, अदरवाइज क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एक चीज और याद रखने की बात है, देखिए अगर वर्ड फ्रूट यूज हो रहा है तो इसके अंदर सीड होगा. अगर किसी के अंदर सीड नहीं है, देन इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज फॉल्स फ्रूट. Another characteristic feature,
A fruit must, a true fruit must always have seeds present within itself. Seeds present within itself. सर ये जो भिंडी है एबिलमोचिस स्कुलेंटस, ये क्या है सर? ये तो वेजिटेबल है। नहीं बेटा, इसके अंदर सीड है। ये फ्रूट है, ये वेजिटेबल नहीं है। वेजिटेबल में कभी सीड होता ही नहीं है। सर ये वाटरमेलन क्या है? तरबूजा, खरबूजा, ये क्या है? बेटा ये फ्रूट है, ये वेजिटेबल नहीं है। अरे जिसके अंदर भी सीड मिल गया वो सबका सब फ्रूट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, वो वेजिटेबल नहीं है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। Vegetable is being formed by the act of vegetative propagation. Fruit is being formed after the act of fertilization. A true fruit must always have seed present within itself. सर बनाना एक फ्रूट है सर। बनाने के अंदर तो सीड नहीं होते बेटा, वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। इट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डू नॉट कंटेन एनी सीड। सर कुछ और भी फ्रूट है, सो दैट इज नॉट हैविंग सीड्स, दोज आर फॉल्स फ्रूट्स। ऐसे फ्रूट जिनके अंदर सीड नहीं है वो फॉल्स फ्रूट है, वो ट्रू फ्रूट नहीं है। Another very important thing. Okay, now we must understand which are the different mode of asexual reproduction in the case of plants. In the case of plants, I is in the case of potato. For example, I in the case of development of I, development of roots from the eyes of potato, from the eye of potato, eye of potato. You would have seen a potato, Solanum tuberosum, from which certain eye-like structures could be projected, and from here the roots could come out. Okay, then this is referred to as formation of eye in the case of potato. Formation of leaf buds in the case of bryophyllum. Formation of leaf buds. Formation of leaf buds in bryophyllum. In the case of bryophyllum, I can show you a leaf. If this is a leaf and buds began to grow off from its terminus, इस लीफ के ऊपर से ही एक नया प्लांट ग्रो करने लग जाए, ऐसा होता है ब्रायोफाइलम के अंदर। ब्रायोफाइलम की लीफ के अंदर क्या हो जाता है, मैं लीफ बनाने की कोशिश करता हूं आपके सामने। ब्रायोफाइलम की लीफ के ऊपर से ही एक नया प्लांट डिवॉल्व होने लग जाता है। न्यू प्लांट स्पीशीज बिगन टू इवॉल्व। ओके, when this leaf falls off from the main plant body, then it gives rise to another plant. Here it has fallen and it will give rise to another plant. New plant will be produced from this particular leaf. This happens in the case of bryophyllum. Is it visible? हाँ, दिख रहा है आप लोगों को? तो ऐसा होता है bryophyllum के अंदर। Then bulbils in the case of agave. There is a plant agave in which bulbil formation can take place. Bulbil in the case of agave. Modification of stem or modification of the roots can also take place. Modification of stem nodes, as in the case of sweet potato, can occur. Ginger can occur, where the modified tuber, the modified stem, the nodes give rise to new roots, and adventitious roots are being produced and new plant body could be produced. So that we will see, that we have seen in the case of ginger. The formation of example, another example could be formation of adventitious roots, adventitious roots from the nodes of ginger, that is formation of rhizome.
As well as we have also seen that offset formation in the case of water hyacinth. Offset in the formation of offset, for example, formation of offsets. Formation of offset in case of water hyacinth. Water hyacinth. And look here, the formation of offset in the case of water hyacinth is also a very good example of asexual reproduction. तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे मेथड्स ऑफ asexual reproduction को समराइज किया है, कितने तरीके के asexual reproduction के मेथड्स होते हैं प्लांट स्पीशीज के अंदर. अब हमें क्या देखना है? अब हमें नेक्स्ट क्लास में देखना है which are the different methods of sexual reproduction. How does sexual reproduction takes place? How does gamete formation takes place? Where does gamete formation takes place in the case of Homo sapiens? मेल्स और फीमेल्स में कहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे, क्या मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट वी विल हैव टू विजुअलाइज. So that we will be visualizing in our next lecture. Do like, share and subscribe this channel. You can post your comments over the comment box, or you can just text your messages or your queries to me. Please revise the topics as well as go for the different MCQ books. MCQ लगाते रहिए और क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, जो भी टॉपिक होता जा रहा है आगे के टॉपिक में से भी पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो. Okay, so in our next lecture we will be talking about the different modes of sexual reproduction. How does sexual reproduction take place? If you want to know the difference between sexual and asexual reproduction, or why sexual reproduction evolved over asexual reproduction, please look at my first video where I have extrapolated the differences as well as has defined how does the process of sexual reproduction is much more advantageous as compared to asexual reproduction, and what is the advantage of asexual reproduction over sexual reproduction. So over and out, this is Nitin Wahi, your mentor from Emprise Academy. Thank you, thanks a lot.